the deformation, right? We have already discussed about the motion and physical quantities, kinematics, dynamics, mass, weight, and density, forces. Uh, Today I'm going to talk about elastic deformation, and after that we'll be talking about turning effect of forces, center of gravity, right? Okay. We know that the forces may produce a change in size and shape of an object, right? We'll talk about that. Define the spring constant as force per unit extension and recall and use the equation. As you can see here, that spring constant is K and K is equal to F over X, right? We will talk about that. ठीक है? उसके बाद sketch, plot and interpret load extension graph for elastic solids, right? And describe the associated experimental procedures, right? Define and use the term limit of proportionality for a load extension graph and identify this point on the graph, and understanding of the elastic limit is not required. और इसमें कुछ बाजू का springs in series and parallel भी आ जाते हैं. So let us begin. Okay, so deformation, we call this elastic deformation, right? The top name of the topic is, you can see here, is elastic deformation, right? Elastic deformation. What is elastic deformation? You should know that when a force is applied on an object, right, may change its shape or size. We hear that when a force is applied, किसी भी चीज पे अगर आप force लगाएं on an object, right, it may change its shape or size. Okay, whenever you apply a force on an object. So if you have an unstretched spring, which is like this is a spring like this. This is an unstretched spring. It does not have any load attached to it. I call this the unstretched length or original length of the spring, which is unstretched length or original length. I call this 5.0 centimeters, right? This is the unstretched length or original length. So if I attach a load here, like this, the length will be extended. So this is the stretch length, right? So this length is the stretch length that we have. The stretch length is 8.0 centimeters, for example, right? So whenever you apply a force, this is the load that we have. कोई भी आप mass लगाएंगे तो उसको load कहेंगे. The load is attached with a spring, right? And there's an extended length that we can get here, right? We call this the extension. So extension is basically is the stretch length minus the unstretched length. So the stretch length here is 8 and the unstretched length here is 5. So the answer is 3.0 centimeters, right? This is the extension in the spring. जब भी आप स्ट्रेच लेंथ में से अनस्ट्रेच लेंथ माइनस करेंगे तो आपके पास उसकी एक्सटेंशन आ जाएगी, कितना एक्सटेंड हुआ है. और यहाँ पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की एक चीज अभी मैं आपको बताऊंगा, वो एक्सीड नहीं हुआ, राइट? ओके, I have here a spring. Let's say the length of the spring is 1 centimeter and I attach a load with this one. So this is 10 Newton load which is attached. So let's say the length of this is now 2 centimeters, right? But what is the extension of this spring? 1 centimeter. Extension, just X is 2 minus 1, which is 1 centimeter, right? If I have another load here, and now this is 3 centimeters. So what's happening is this is 20 Newton. What is the extension now? 2 centimeters. So uske baad we have another length here. Now it's 30 Newton, right? And let's say the length is 4 centimeters, stretch length. The extension is 3 centimeters, right? अच्छा, उसके बाद अचानक एक चेंज आएगा. लेट्स से हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाया और इसकी लेंथ होनी चाहिए थी 5, इसकी लेंथ हो गई है 6.5. अब एक्सटेंशन आ रही है यहाँ पे और लोड है 40 न्यूटन का. अब जो एक्सटेंशन आ रही है वो आ रही है 5.5 सेंटीमीटर. दिस इज अ ड्रास्टिक चेंज फ्रॉम व्हाट यू हैव सीन हियर एंड हियर एंड हियर एंड हियर. सो it has bypassed the limit of proportionality, right? It has gone beyond the limit of proportionality. And if we draw a graph here
of extension and force, the graph is going to look like this. We have extension on the y-axis and we have force on the x-axis, and it goes like this. Straight line, then it bends towards the extension axis, right? This point here is where it has bypassed the limit of proportionality, right? So this point is known as the limit of proportionality P, right? This point here is the limit of proportionality. Let me draw it here. This is a straight line here, like this. And then we have, what's happening is that after this point, it has gone beyond proportionality, right? So this point here is point P. और इस P को हम कहते हैं limit of proportionality. Limit, try to bring it from back from here, it will come back to its original point. लेकिन अगर आप यहाँ से इसको वापस लाएंगे तो ये वापस अपनी जगह पे नहीं आएगा. There will be, अगर आप लोड उतार देंगे तो यहाँ पे एक परमानेंट एक्सटेंशन आ जाएगी. ठीक है, परमानेंट एक्सटेंशन आ जाएगी. देखिए, दिस इज अ परमानेंट एक्सटेंशन दैट यू कैन सी हियर. परमानेंट एक्सटेंशन, दिस इज द फोर्स. तो ये ग्राफ हमेशा एक्सटेंशन एक्सिस की तरफ मुड़ेगा. And as you can see here, that the point P is the limit of proportionality. From the starting point till point P, the force is directly proportional to extension. That force is directly proportional to the extension, the limit of proportionality. Force is directly proportional to the extension till the limit of proportionality. What happens after the limit of proportionality is the elastic material deforms. The spring will not regain its original length after it deforms, right? ठीक है, आप वापस यहाँ से देखे जाएंगे वापस तो वापस आ जाएगा, लेकिन इससे आगे आप वापस लेके जाएंगे लोड आपके पास जीरो होगा. और पी के बाद ये हुआ है कि आप उसको जब वापस लेकर आएंगे तो वो देखिए पी के बाद वो बेंड हो गया एक्सटेंशन एक्सिस की तरफ, राइट? मतलब आप लोड उसके ऊपर डाल रहे हैं लेकिन वो एक्सटेंशन जो है आपके पास ज्यादा हो रही है कम लोड के लिए, बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर रही है और उसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्सीड कर गई है. फोर्स एक्सटेंशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है. फोर्स एक्सटेंशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है. ठीक है, पी तक फोर्स एक्सटेंशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. आफ्टर द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी is exceeded, the elastic material deforms. Spring will not regain its original length after it deforms. ठीक है, 1 सेंटीमीटर लेंथ नहीं रहेगी. अब उसकी लेंथ हो सकता है उसकी लेंथ अब हो गई हो 2.7 सेंटीमीटर. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 नहीं रही. तो ये 2.7 क्या है? 2.7 का मतलब है कि उसकी परमानेंट एक्सटेंशन आ गई है और वो उसकी लेंथ 1 नहीं रही. लोड के बगैर उसकी लेंथ 1 नहीं रही, एक परमानेंट एक्सटेंशन आ गई है. सही है. रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ आफ्टर इट डिफॉर्म्स. ठीक है, तो ये आपके पास फोर्स और एक्सटेंशन का वो है. अगर मैं इसको कुछ इस तरह से बना लूं, मेरे पास फोर्स y एक्सिस पे है, मेरे पास एक्सटेंशन ये है और मैं कुछ, ठीक है, अब ये फोर्स एक्सटेंशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सटेंशन एक्सिस की तरफ बाद में बेंड करेगा. ये यहाँ तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है. अगर मैं देखें और अगर मैं इसको यहाँ से वापस लाना चाहूंगा तो ये वापस अपनी जगह पे नहीं आएगा और कुछ परमानेंट एक्सटेंशन आ जाएगी. ये परमानेंट स्ट्रेच है. देयर इज अ परमानेंट स्ट्रेच. So after the elastic material deforms, okay, the elastic material here has deformed. Here the elastic material has deformed. So force and extension are directly proportional until the limit of proportionality is exceeded. Okay. So P is known as the limit of proportionality. I've already told you. After that, it will, कोई भी elastic material हो, the elastic material here has deformed and will not regain its original length. कोई भी elastic material हो, its original force here is the stretching force, x here is the extension, gives you F over x is equal to a constant k. K is known as the spring constant. इसको हम कहते हैं spring constant. F is equal to kx is the formula that we, new formula that you have is F is equal to kx. ये जो k spring constant है, इसके SI units क्या होंगे? SI units for spring constant are Newton per meter. Or you can also write it like this. Other units of spring constants are Newton per centimeter or Newton per millimeter. Of spring constant or Newton per centimeter, Newton per millimeter. Right? How you will. So spring can be used. Yes, spring ही हम use कर रहे हैं elastic material, right? Limit of proportionality की definition क्या है? The point until where
The stretching force is directly proportional to the extension. After this point, the spring deforms. Right here, point where the stretching force, after this point, spring deforms. A couple of questions. The graph shows the extension of a piece of copper wire as the load on it is increased. What does the graph show? At a certain load, the wire becomes easier to extend. After this point, the wire is easily extended. Answer is A. ठीक है. C तो है कि वो all loads के लिए थोड़ी है, यहाँ तक थोड़ी है. It's not for all loads. It's still limit of proportionality. For all loads, इसका आंसर A है. इस तरह से है ना कि अगर कुछ लोड के बाद वो आराम से एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगा. देखिए, आपके पास इस पॉइंट के बाद आप थोड़ी सी फोर्स लगा रहे हैं, वो ज्यादा एक्सटेंड कर रहा है. D है सर. It's harder to extend. लोड बढ़ाते जा रहे हैं, एक्सटेंशन थोड़ी सी होगी. D is the answer. लोड बढ़ाते जा रहे हैं, एक्सटेंशन बहुत कम हो रही है.